हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? व्हाट अ प्लेजर टू सी यू बैक आफ्टर वन डे ब्रेक। एक ही दिन की कल ब्रेक थी, अदरवाइज वी कंटिन्यूड आवर सेशन इवन व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग तब भी बात होती रही। सो वी आर बैक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इसको मैं कर देता हूँ बंद। एंड काफ़ी कुछ है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2023, अक्टूबर महीने की 31 तारीख, सन है 2023। आज इंडियन यूनिटी डे है। टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, credited with creating or amalgamating more than 500 small states into Union of India in a very short time. So सरदार means chief, सरदार मीन्स लीडर, तो इनको सरदार की उपाधि दी गई थी एंड वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो टुडे इज़ यूनिटी डे। How you have to celebrate unity, I leave it to you. For me, my meaning of unity is to identify yourself with the tricolor, the national anthem, the Constitution of India, and the entire idea of being an Indian, where everyone who is born here, irrespective of caste, creed, religion, anything, language, ethnicity, we are all Indians, and thus it's our bounden duty to love all Indians in the manner that we should. So for me, Unity Day means a day to resolve ourselves to stand united, unity in diversity, है ना? So ये खूबसूरती हमारे देश की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. So that is the best way to celebrate Sardar Vallabhbhai Patel's birthday, dream of the founding fathers of India's constitution. Next, today is also a very sad day in a manner that it was on this day that Mrs. Indira Gandhi was assassinated by her own bodyguards in her own house as the Prime Minister of India. What followed was riots and thousands killed, thousands injured, homes burnt, and scars for a lifetime for the families, and no closure at all, because I have not seen anyone convicted on those horrendous crimes. So two diverse cities, two different ways, but that is India. We have to go along and move forward. आज काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए, मेरे पास काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए. एंड हाँ, द बेस्ट पार्ट इज़ yesterday we concluded BOAC 22. कल शाम को बहुत बढ़िया फीडबैक रहा बच्चों का. Some I'll share with you in a day or two. And then today we are starting BOAC 23. आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, because there are boys and girls who SSBs are coming or close by, and many of them just want to get a flavor ki what is SSB looking for. Don't spend hard earned money of your parents going to some far off places where you're taking coaching, and then you end up nothing. So ये देखने के लिए आप कितने पानी में हो, आपकी पर्सनालिटी में कितना आपने इम्प्रूवमेंट करना है, कितना आपने, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस यूट्यूब देख के या लोगों की बातें सुन के आप बड़े कंफ्यूज रहते हो. हियर यू विल गेट अ मॉक इंटरव्यू, you will get a psych assessment, and you will get an entire GTO series, and it will open up. दिमाग एकदम खुल जाएगा कि यार ये फौज में मांग क्या रहे हैं और मेरे में क्या है और क्या नहीं है. सो दिस नॉलेज, यही नहीं पता हमारे को कि हम कितने पानी में हैं. जिस जॉब के लिए हम रील देख के, फ़ोटो लगा के, NDA एस्पायरेंट, NDA कैप्टन सो एंड सो, लेफ्टिनेंट, मेजर, फ्यूचर, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, पैरा SF में जाना है. बट जब आप बैठते हो साइक असेसमेंट में, आपको पता चलता है कि यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो. सेम इज़ ग्रुप डिस्कशन, नरेशन, PPDT, लेक्चरेट, मॉक इंटरव्यू. कल हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर बता रहे थे, ब्रिगेडियर नारायण, कि 70% चिल्ड्रन डोंट नो अबाउट देयर ओन सराउंडिंग्स. उनको अपने गांव का, अपने शहर का, अपने ज़िले का कुछ भी नहीं पता है. एंड दैट इज़ द बिगनिंग. फर्स्ट 5 to 10 minutes in the interview, the IO is just trying to make you comfortable by asking simple question about your family, about your village, about your background, about your school. यही नहीं पता है, इसी में सफाचट है, पता नहीं कहाँ क्या पढ़ते रहते हैं. तो ये चीज़ें जो है ना, इट हिट्स यू हार्ड कि अरे लेट मी एटलीस्ट फाइंड आउट अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई फैमिली.
अब पेरेंट्स का ही नहीं पता है, ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं पता है आप लोगों को, तो ये बड़ी फिर वहाँ जाके फिर यू नो यू गेट स्क्रीनड आउट और यू गेट कॉन्फ्रेंस आउट, फिर यू स्टार्ट ब्लेमिंग द सिस्टम, यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं. Start looking inwards, start introspecting. That is why we came up with this innovative, very very innovative course. Anyway, chalo. So we will start the Indian Express. Delhi excise policy case is taking a totally different turn. Yesterday, one of the ministers' bail has been rejected by Supreme Court. So this case looks to be a very tight case by Enforcement Directorate. Let's wait and watch what is going to happen in future. Though we don't cover crime and politics, but somewhere this is connected to both the things. New thing that is taking place is this Maratha quota stir turns violent. This is going on in certain parts of Maharashtra, especially in Bid district. But we will speak more on current affairs issues which are related to your interviews, your group discussions and things like that. Usme, this is a statement of Mr. Jaishankar. We will do all to secure release. Jaishankar assures kin of 8 on Qatar death row. So yesterday he has met the families. They have also met the naval chief, and the case is becoming very very grave, very serious, very sensitive. Nobody is wanting to talk on it. Lot of videos on YouTube and lot of freelancers have said so many things about it, but I am going to record an interview today for you all to know exactly what has happened, why it happened, and what is the way forward. This is a very serious case where 7 officers and a sailor are in prison for over a year in Qatar, and they have been sentenced to death. So we will discuss this. Manipur, there is an interview by DG Assam Rifles, and only 25% weapons have come back. हमने डिस्कस किया था 4 से 5 हज़ार weapons were looted or were taken away or given away by various police stations and armed police units. And only 25% have come back. So large amount of ammunition and weapons, and some of them very very sophisticated latest weapons are in the hands of people who shouldn't be holding them. So Manipur में भी अभी तक situation is less than normal. This electoral bond case hearing is to start today, but the surprising part was the statement yesterday by the Attorney General of India, R. Venkatramani. He tells the court people have no right to know. Which political party is getting how much money from whom. तो ये बड़ी surprising चीज़ लगी है. The entire election system is to talk to us and get our vote. And जो वोट देना चाहता है उसको ये नहीं बताना चाहते कि जो पोस्टर लगे हुए हैं, ये बैनर लगे हुए हैं, this aircrafts are moving, helicopters are moving, money in tons is moving from here to there. Money in crores is caught by the Enforcement Directorate, police everywhere. Who is giving this money? So this appears to be a little, let's see how the court deals with this case. But this is what the Attorney General says on behalf of the government, that people need not have, their right to know is not absolute, and they have no right to know who is giving how much to any political party. तो इस पे तो मैं बात करता रहूँगा, चिंता मत करो. इस पे कभी थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए फिर हम एक स्पेशल क्लास भी लेंगे आपको समझाने के लिए. व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, व्हेन वर दे इंट्रोड्यूस, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाई दे वर इंट्रोड्यूस्ड, एंड इट वाज इमीडिएटली challenged. But it has taken so many years. Nobody heard the case. Finally, Supreme Court has found time and the hearing has started. तो देखते हैं. Delhi AQI AIM study links nitrogen dioxide to 53% spike in ER patients. ER patients are emergency room patients. So there's nitrogen oxide available in this. The quality of air is so poor. It is very poor. Bombay is also very poor. तो ये हमारे देश का हाल है as far as air pollution. And it's not only Delhi. प्लीज़ दिल्ली बॉम्बे नहीं है, ये पूरा NCR है. ये रोहतक भी शामिल है इसमें, सोनीपत भी शामिल है, फरीदाबाद भी है, नोएडा भी है, everywhere. Then even category B cities, C cities, everywhere the dust
धूल है और धूल के साथ धुआं है, और अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो उसके साथ पटाखे का भी तड़का लग जाएगा। तो आप देखना बच्चों की और बुज़ुर्गों की क्या हालत होती है। A very inspiring story. This is Vandana Kataria. She completes 300 games today. Vandana Kataria from Haridwar. So she broke the glass ceiling by playing for India from a very very small town. Haridwar की रहने वाली है ये. It was so nice to read her story that people used to hurl caste slurs एंड कि लड़की खेलने जा रही है निक्कर पहन के, ऐसे पता नहीं क्या क्या इसको बोलते थे। इसने कभी नहीं सोचा मैं इंडिया के लिए खेलूंगी, बट शी इज़ प्लेड एंड टुडे शी विल प्ले हर 300th मैच। दिस इज़ अ रिकॉर्ड फॉर एनी वुमन हॉकी प्लेयर। सो ऑल कुडोज टू दिस चैम्पियन गर्ल वंदना कटारिया। सो प्राउड। मैं ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे पता है देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स who listen to me, lot of girls who watch this podcast and this daily analysis, कि आप जो चाहो हो सकता है, जो चाहो हो सकता है, provided you have the passion. And my pet dialogue is fire in the belly and passion in the heart, है ना। पेट में एक आग धधकनी चाहिए और सीने में एक धड़कन होनी चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें, ये जिसके पास हैं उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। एक बार रुक जाओगे, दूसरी बार रुक जाओगे, but eventually you will meet success. Yesterday we had a student Aditya in the class. He's missed many SSBs and he was saying sir और क्या करूँ मैं, बहुत मुश्किल होती है, कभी कॉन्फ्रेंस आउट कभी स्क्रीन आउट। मैंने कहा फिर आप जो है अपना सागर राठी का इंटरव्यू पढ़ लेना। 11th चांस ही गॉट रिकमेंडेड, 11th चांस। तो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। अगर सच में सपना आपका है कि यूनिफॉर्म पहननी है, ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है, तो फिर आप लगे रहो और हर बार देखो कि कमी आप में है। सिस्टम में कमी ढूंढोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। विच एवर सिस्टम, वॉट एवर एग्जाम, इट इज़ एन एग्जाम, यू नो द पैरामीटर्स, यू कांट फाइट इट। नाउ हाउ यू कैन फाइट इट इज़ टू ट्राई टू फिट इन टू दैट, ठीक है। तो ये है कमाल की बात। अभी आई गया मुंबई की बात कर रहे थे हम, मुंबई एयर टर्न सीवियर, नो BMC हेल्थ एडवाइजरी। तो अभी कई बार तो मना कर देते हैं, हमारे टीवी तो कवर नहीं करेगा पोल्यूशन, आप कभी नहीं देखोगे। उनके पास और ज्वलंत मुद्दे हैं, आग लगाने वाले काम हैं, तो वो कभी नहीं कवर करेंगे। पोल्यूशन, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, they will never cover. But good we have these newspapers and students like you who need to know this. तो मुंबई का भी डेथ बाय ब्रेथ, देखो क्या ज़बरदस्त चीज़ लिखी है, मुंबई टॉक्सिक एयर डेथ बाय ब्रेथ। तो कितने मिलियंस ऑफ इंडियंस लूज देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस द एयर दे ब्रीथ, एंड दिस इज नो फॉल्ट ऑफ दिस, We'll go inside and see, the editorial. This is a statesmanship vacuum. Pratap Bhanu Mehta, he used to be a professor in Ashoka University. Now he writes very regularly, writes very candidly, writes very frankly. I love his writing. I just love the way he writes. So he has written that it has been 24 days. Even I didn't think the war will go to 24 days. मैंने कहा 10-15 दिन फोड़ेंगे ये हमास को और फिर जो है पीस हो जाएगी। But this is not stopping. I was thinking they will not go for ground offensive, but limited ground offensive they have gone. They have gone in the northern parts of Gaza. So 24 days and more than 8,000 people killed in Palestine, 1,400 in Israel, more than 3,200 children killed, more than 3,200 small children killed. But the world has become stone, and the leadership vacuum. He says none of the leaders, political leaders in the world have given any assurance or risen above their क्या कहते हैं party lines. US, UK, फ्रांस आग में घी का काम, पहुंच गए वहाँ फटाफट के जी बताओ क्या चाहिए और मारो। And बाकी world leaders, they are just neutral kind of statements. UN General Assembly, imagine a bill calling for truce and harmony, also had 45 abstentions including India. So इसके ऊपर है, the editorial today is on this.
it's incumbent on Israel to respect and heed US caution that even war has rules. So UN has said, यार ठीक है, तुम नाराज़ हो, तुम्हारे लोग मर गए हैं, और you are shocked and surprised, and Hamas ने, what Hamas has done is a terrorist action, there's no doubt about it. But even then you have to follow certain rules. How many will you kill? And what about killing small children? Will you bring entire Gaza, create into debris? There are 23 lakh people there. And hospitals, there are very few hospitals working now. There's no water, there's no electricity. I can imagine the condition there. So as Israel intensifies ground offensive, the reports coming out of Gaza tell disturbing tales of deepening humanitarian crisis. Neighborhoods that have been reduced to rubble. अभी 8,000 से ऊपर बॉडी रिकवर हो गई हैं. जो अंदर दबी हैं मलबे में, उनका नहीं पता, उनका कोई पता भी नहीं चलेगा. There will be so many bodies which may never ever recover. कौन रिकवर करेगा? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अगर पूरी धराशायी हो गई है और उसके फ्लोर्स के अंदर बच्चे सो रहे थे या कुछ लोग थे, उनका they'll never be recovered. So death toll will be certainly, and the paper is calling the attacks of Hamas as appalling. 1,400 dead, 220, 229, 230 Israelis as hostages. But even then, Israel is doing is also blatant, misuse of firepower. So this is इसके ऊपर, as somebody has recommended, I will do another podcast after some time on what after this war for Hamas and for the Palestinian authorities. ठीक है. Now we have again to clear the air. Beijing used to be as bad. Beijing used to be as bad as what we are in Delhi and Bombay. 2008 Olympics was in Beijing. The way they cleaned their air, the Chinese, whatever, it must be very harsh measures they took to clean up the air of Beijing. Now I believe Beijing has absolutely wonderful air. This is what I was reading somewhere, I don't know, but I was reading somewhere that after 2008, abhi kitne saal ho gaye, they have maintained. So we need some harsh measures, we need some strict control. We can't let our financial capital and our political capital collapse because of bad air. तो ये के श्रीनाथ रेड्डी का आर्टिकल है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एयर पोल्यूशन कैन नॉट बी मिटिगेटेड बाय पर्सनल प्रोटेक्शन. आपने मास्क लगा लिया, घर में एयर प्योरीफायर लगा दिया, उससे बात बनेगी नहीं. वी नीड क्लीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड रैपिड ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स आर नीडेड. Mr. Narayan Murthy has created quite a controversy in the country by calling out that Indians are not working enough. The young people, they should work 70 hours a day. तो 70 hours, ये प्रोमिता चक्रवर्ती का आर्टिकल है. She has written that is a recipe for stress, guilt and anxiety. He says, ये तो बुजुर्ग हो गए हैं, but it's a recipe, 70 hours. अभी आगे एक स्टैटिस्टिक्स भी है हिंदू के अंदर, कौन से देश में कितने लोग कितने घंटे काम करते हैं, एंड हाउ मच ऑफ टाइम डू स्पेंड ऑन रिक्रिएशन. हमारे यहाँ कोई रिक्रिएशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई फन, कोई पार्टी, कोई मस्ती, कोई सैटरडे संडे को फैमिलीज गई हुई हैं पिकनिक में, पूरा दिन बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, वो बहुत कम नज़र आता है. वी आर हाईली स्ट्रेस्ड, इधर वर्क और घर के अंदर भी मतलब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है. तो शी सेज कि अगर ये लोग इतना काम करेंगे, दिस विल अमाउंट टू 11.5 hours ऑफ वर्क अ डे. 11.5 घंटे आप काम पे चाहते हो लोगों को. कॉर्पोरेट में वैसे जूस निकाल के रखा हुआ यंग जनरेशन का. सो दिस इवन आई फील कि पर्सन ऑफ हिज स्टेचर should have spoken on extracurricular activities, on happiness quotient, how we can be more healthier. अगर 11.5 घंटे जो काम करेगा, आप सोच लो उसकी हेल्थ पे और उसके बाकी पैरामीटर्स पे क्या असर पड़ेगा. बट वेल, ही इज़ अ वेरी रेस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर, सो ही मस्ट बी हैविंग some reasons to say so. Anyway, now we come to explain issues in electoral bond case. ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. ये मिस्टर जेटली हैं, अरुण जेटली. ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर. ये 2017 के बजट में ये लेके आए थे ये स्कीम, और तभी से ये जो ना एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड कम्युनिस्ट पार्टी हैड गॉन टू कोर्ट, एंड उसके बाद जो है
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी थे उस टाइम के, A.K. ज्योति का नाम भी है, एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, सब ने बोला था कि ये जो है इसमें अनचेक्ड फॉरेन फंडिंग आएगी, अनचेक्ड फॉरेन फंडिंग, अनचेक्ड डोमेस्टिक फंडिंग। अब हवाला में पैसा कैसे घूमता है आप देख ही रहे हो, कई बड़े बड़े कॉरपोरेट के जब खुलती खबर उनकी अखबार के पन्नों में कि कहाँ कहाँ शेल कंपनीज हैं, तो वी डोंट नो हुज मनी फ्रॉम वेयर दिस मनी कम्स, एंड देन दैट मनी गेट्स स्पेंट in elections, in form of inducements, in form of posters, in form of travel, in form of so many forms, and then we call it the dance of democracy. So ye electoral bonds. Then we have Nepal. Nepal again, environmental issue. 1/3 of their ice they have lost. 1/3 of the ice. I know Siachen base camp. मेरे देखते देखते 2007 में मैं CEO था, एंड 2018 आई वेंट एज GOC देयर. उस 11 साल के अंदर इवन द सियाचिन स्नो had melted and gone much deeper, जहाँ हमने देखा था. When the operation started 84 में, it was many miles this side the glacier started. So all over the world, ice is melting. Global warming is playing a dangerous game on our lives. Now we come to China का BRI के ऊपर एक आर्टिकल है, Belt and Road Initiative. They have completed 10 years. We covered it earlier also. Good, bad, ugly. Many successes, many misses, many negatives, but overall still a project which was never seen, and no country could ever imagine. Even US at heights of its power, or Russia were funding and given, but nobody ever thought of creating something what China has created in many parts. This is again, of course, Gaza city struck from two sides as Israel tanks troops advance. Pakistan has given a deadline of 1st November, that is tomorrow, for Afghan refugees to go. तो इसकी वजह से भी काफ़ी टेंशन है अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है. तो ये कहाँ जाएंगे जो इतने सालों से पेशावर में, क्वेटा में और उन एरियाज़ में अफ़गान रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये. तो इसको लेके भी पाकिस्तान अभी दुखी हो चुका है इनसे, बोला तुम वापस जाओ अपनी कंट्री में. ये डेथ टोल है जो आता रहता है, 8,306 पैलेस्टीनियंस एंड मोर देन 20,000 पैलेस्टीनियंस इंजर्ड. इसराइल का फिगर रिमेन स्टैटिक. What happened on the Blitzkrieg on 7th October, where they were caught totally unaware. So that is still matter of investigation by Israelis. Hindu, there's another train accident. कल मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, द अमाउंट ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स, द अमाउंट. और हम फिर बात करते हैं कवच है, ये हमारी IIT ने ये एंटी कोलिजन बना दिया है, इतनी बड़ी पब्लिसिटी स्टंट होती हैं, बट सो मेनी ट्रेन्स आर नाउ. एंड अगेन ह्यूमन एंगल, पिछली जिसमें 250-300 लोग मरे थे उसके अंदर भी कहते हैं ह्यूमन एंगल, हियर अगेन ह्यूमन एंगल. सो वाई दिस ह्यूमन एंगल, वाई टेक्नोलॉजी, वी डोंट हैव, आई डोंट नो. Supreme Court puts Maharashtra Speaker on deadline. Speaker is just not taking a decision which she could have taken long back when many MLAs just overnight left. Overnight they left and reached Gujarat, and from Gujarat they were taken in a special flight to Guwahati. They stayed there for many days, came back and the government had fallen, and उनके ऊपर disqualification under the anti-defection law, the speaker is not taking it. तो फाइनली कोर्ट ने उनको काफ़ी टाइम दे दिया है, अभी December 31 दे दिया उनको टाइम कि आप December 31 तक डिसाइड करो आपने क्या करना है. तो लेट अस सी whether the speaker will take a decision or he will keep delaying it as much as possible कि सरकार का टेन्योर ही पूरा हो जाए, सरकार का टेन्योर ही पूरा कर दो. नहीं तो many of the top ministers could be disqualified if the actual law takes its course. Anyway, now we come to, there is again Israel-Hamas conflict is at bend point. ये मैं इसलिए पढ़ा because जो Mr. Trimurti हैं, he was India's representative in Palestinian Authority. So he stayed in Gaza from 1996 to 98. He stayed in Gaza, and he says जिस घर में वो रहते थे, even that has been reduced to rubble. So he says, I don't know about my tenants, wonderful people whom I stayed with them in Gaza for 2 years. So situation, again he's
talking of the same. This what Israel is doing is dehumanization. The kind of bombardment, the way it is just pulverizing is unacceptable. Unacceptable. Then it talks of India's stand, talks of the Arab world, and this I two, you two, India, Israel, US, and UAE and United States groupings, and India can play a positive role in somehow bringing peace there because we have good association with Israel, very good in fact, and also with the Palestinian Authority. Lost voice. This is of course critical of the government's abstention in UN General Assembly. So the paper says India should have made efforts for a consensus on the Gaza vote at the UN. So India has explained its decision. India ने बोला यार तुमने 7 अक्टूबर का जो क्राइम था उसका जिक्र नहीं किया इसलिए we are abstaining. However, the death toll is rising and need for global solidarity to stop the violence is imperative. A task that New Delhi, with its traditionally balanced position on the issue and recent G20 role in bridging global divides, would have been well suited to play. So we have not been able to bring about, but many countries have failed to bring about any consensus on the issue. You are aware of that. Yeah. Putting 70 hour work into perspective. ये मज़ा क्या आता है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहीं आके कंफ्यूज हो जाती है, क्या करें, हम तो इतनी चलाते हैं, बट आजकल बच्चे जो है ये YMA में पढ़ रहे हैं, और ये देखो इन्होंने दिया स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स हिंदू का है कि किस कंट्री में कितने लोग क्या करते हैं. टीवी और रेडियो जापान में, जर्मनी में 3.5 घंटे, जापान में अबाउट 3 आवर्स, इंडिया में 1.7. स्पोर्ट्स, ये देखो स्पोर्ट्स एरा, जर्मनी में इतना, इंडिया में 0.08 आवर्स. 0.0 कितने मिनट स्पोर्ट्स हम खेलते हैं आप देख लो हैं. अदर अनपेड वर्क, वॉलंटियरिंग, लेजर एक्टिविटी देखो, लेजर एक्टिविटी, पिकनिक वगैरह करना, घूमने फिरने जाना, लेजर एक्टिविटी. जापान, जर्मनी, इंडिया देखो, हम घूमते ही नहीं हैं. हमारे यहाँ कोई खुशी, मुझे कहीं, ठीक है त्यौहार पे लाइट लगा लेंगे, घर के आगे बत्तियाँ जला लेंगे, पटाखे फोड़ देंगे, बट डू वी हैव लेजर एक्टिविटीज़? डू दैट इज़ लैकिंग. स्लीप, इवन वी आर स्लीप डिप्राइव्ड. आप ये देखो, इवन वी आर स्लीप डिप्राइव्ड कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज. हाउस होल्ड वर्क, ये देखो ज़्यादा है हमारे यहाँ. सो दिस थिंग ऑफ working 11.5 hours a day, which Mr. Narayan Murthy wants, what is going to happen to the people? In most other countries, they are talking of 4-day week. कई जगह 4-day week आ गया कि आप 4 दिन ही काम करो, 3 दिन मस्ती में रहो, जिससे कि 3 दिन मस्ती करके 4 दिन दबा के काम करो. So urban India is already working 9.6 hours a day. 9 स्पेशली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, गवर्नमेंट में तो पेन डाउन करके आ जाते हैं लोग, बट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत काम करना पड़ता है. इवन दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 आवर्स. सो इट विल इंक्रीज स्ट्रेस, इट विल इंक्रीज क्या कहते हैं आपका एंग्जाइटी एंड फिटनेस. फर्स्ट थिंग दैट विल हिट इफ यू वर्क इन ऑफिस फॉर टू लॉन्ग इज योर फिजिकल फिटनेस. मानते हो ना, तो बीमार हो जाएंगे लोग. ओके. देन ईजिंग द ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय रेलवेज. ये पता नहीं मैंने पहले आपको नहीं बताया है, रेलवेज का मेन काम है कार्गो हॉलिंग. दे अर्न मनी ओनली व्हेन कार्गो मूव्स, ठीक है, नॉट बाय पैसेंजर ट्रेन्स बाय एंड लार्ज आर लॉस मेकिंग. दे आर वेलफेयर मेजर, बट रेलवेज वॉट एवर मनी दे अर्न इज इन मूवमेंट गुड्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स. तो उसके ऊपर है. बट नाउ विद रोड्स इम्प्रूविंग, trucks coming in, it's tough challenge for railways to compete with the goods carrier because वो सीधा घर पे पहुंचा देता है, ट्रक घर पे लग जाता है, यहीं सामान लोड करो, यहीं उतार लो जहाँ जाना है. रेलवे के लिए कहीं बुकिंग करानी पड़ेगी, फिर वहाँ से लाना पड़ेगा. सो इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट सिस्टम, बट एनीवे. देन वी हैव क्विज ऑन सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑन हिज 148th birth anniversary. Yeah, this is a very interesting article on the photocopying. कब स्टार्ट हुई? ये हमारे सामने स्टार्ट हुई. पहले फोटोकॉपिंग नहीं थी. सो ये जब से फोटोग्राफी शुरू हुई, फोटोकॉपिंग शुरू हुई और जेरोक्स आया,
Xerox means dry. It's a Greek word. Zero means dry. देखो, zero is Greek word, वहाँ से आया Xerox कि Xerox करा लो. तो नोट्स बनाने का, कॉपी करने का, और ये जो है एक रेवोल्यूशन आ गया with this wonderful machine called the Xerox machine and photocopy. Know your English? Then of course we have Biden has signed. This is very very important news. This is very important news. Biden signs order to regulate AI in US days before Sunak's AI safety summit. तो ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं. 1 साल कंप्लीट कर लिया उन्होंने. But that is not related to the news I am covering. This is AI technology. So there is a summit in Bletchley Park where on how to regulate AI. उससे पहले हमारे जो बाइडन ने साइन कर दिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन कि कंपनीज विल नोटिफाई गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट इम्पैक्ट नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ. ये पॉइंट नोट करने वाला है. क्या है जो बाइडन के उसमें कि ऑल कंपनीज, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, पता नहीं कितना काम कैलिफोर्निया में होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते. व्हेन आई सी द कैंपसेस ऑफ दोज कंपनीज, इट इज़ just buildings and buildings and parks and parks and parks. Huge it is. तो वहाँ ये AI पे काम चल रहा है बहुत ज़्यादा. AI पे ऑटोनोमस कारें चल रही हैं सैन फ्रांसिस्को में, और ड्राइवर ही नहीं है और कारें चल रही हैं. मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दे हैव डन. वेनो, वेवो, पता नहीं क्या कितने नाम हैं उनके. तो वहाँ पर उन्होंने साइन किया कि 3 चीज़ें कंपनीज विल इन्फॉर्म द गवर्नमेंट दैट इम्पैक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड पब्लिक हेल्थ. तो ये 3 चीज़ें इनको बतानी पड़ेंगी. अभी देखो द फॉल आउट ऑफ व्हाट इजराइल इज डूइंग. फॉल आउट. सो देयर इज इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ रशिया, दंगिस्तान में, विच इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी, देयर इज एन एयरक्राफ्ट विच लैंडेड एंड उसकी खबर लग गई कि इसमें ज्यूज़ आए हैं इसराइल से. सो पीपल जस्ट स्टॉर्म द एयरपोर्ट. People stormed the airport to catch these people and kill them. This is the kind of anger. If it can happen in Russia, आप सोचो what must be the anger in the Arab world. ठीक है, चलो. ये चाइनीज़ वेसल का भी एक इशू आता रहता है. There is another Chinese vessel which has come to Sri Lankan port and they have been given 2 days by Sri Lanka to do their research and go. India always raises an objection to this. We call it the spy ship. ये Chinese ship है. This keeps coming this area. They are probably doing some surveys. Sri Lanka, though very close to us, has to accommodate China also, because China also has built their ports and they have given them a lot of soft loans to tide over their crisis. ये देखो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है. बाइडन अनवेल्स स्वीपिंग रूल्स टू रेगुलेट एमर्जिंग AI टेक्नोलॉजी, sets new standard on security and privacy protection with far-reaching impact on companies like Amazon, MS and Google. तो ये presidential order वहाँ साइन हो गया. ये mob storms Russian airport to catch Jewish flyers from Israel. 20 injured, 60 held. Moscow blames की. Moscow ने बोला ये यूक्रेन ने किया. But imagine and world over I'm telling you, even in western capitals people are out on the streets supporting the Palestinians. ये बंद कर दो, बहुत हो गया. So let us see when it will stop. I had one more something for you. देखो, we don't cover crime, we don't cover politics, वी डोंट कवर क्रिकेट. तो कितना टाइम बच जाता है. अब नहीं तो 4 पेज तो क्रिकेट पे फोटो लगा रखे. क्रिकेट, फुटबॉल, पता नहीं क्या है ना. अपना इंटरेस्ट है तो पता होना चाहिए. बट अदरवाइज ये इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मनी. तो सुप्रीम कोर्ट बिगिंस पोल बॉन्ड्स हियरिंग. नोट दैट पॉलिटिकल फंडिंग इज अ चैलेंज नो डेमोक्रेसी हैज सॉल्व. तो द न्यूज़पेपर सेज कि ये पॉलिटिकल फंडिंग जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एंड वर्ल्ड ओवर डेमोक्रेसीज आर ग्रैपलिंग विद दिस
कि कितना लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, मनी कहाँ से आनी चाहिए, मनी कैसे आती है. तो बट पॉलिटिक्स रन्स ऑन मनी. ये क्लियर है कि यू कांट बी अ पॉलिटिशियन, यू कांट बी अ लीडर in today in any democracy, I think, if you do not have the money makes the merry go round. This is angry God's own country. Very sad what is happening in Kerala of a very small sect. I didn't even know there is a sect like this in Kerala. तो केरला की डाइवर्सिटी बड़ी अजीब है. वहाँ पे as per this paper 57% are Hindu, 23% are Muslim, and about 19% are Christians. Within Christians there are many different sects. Same as within the Muslim, there are many different sects in Kerala and also among the Hindus. So this particular group where about 1 lakh people had got together and somebody has planted bombs there was quite different. So anyway, God's own country where people have lived in harmony, वहाँ पर भी अभी रिलीजन, कास्ट और क्रीड का तड़का जो है लगाया जा रहा है. कोशिश हो रही है कि थोड़ा सा फर्मेंट किया जाए and to get people's anger out. This is on the House panel's coding doesn't fix the problem. ये जो हमारे IPC को जो हमने चेंज करके बनाया है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 BNS, तो उसको लेके there are this 2 writers, Naveen Mohammed and Ayushi Sharma. They have written on couple of things, that is lynching पे, then organized crime or terrorism, adultery, and of course marital rape. Also marital rape. These are the issues which जो है ना, these writers said कि they must come into this and they must be seen in correct perspective. Lynching, adultery laws and marital rape. So ये laws भी काफ़ी पुराने, especially adultery laws, again all made by the British. चलो, so न्यू ईयर इज राउंड द कॉर्नर, नो योर हेल्थ एट अ ग्लांस, ये सब बाद में कवर करेंगे. सो विद दिस आई हैव फिनिश्ड बिकॉज आई हैव समथिंग आफ्टर दिस. तो लेट मी सी some of your questions. Firstly, the comments, and right on top, if I see the comments of Vaishnavi and Manju Sharma, amazing comments, very good English you are using, कमाल है. Akashdeep Rajput, Mohan Yadav, and Sumed, Gulshan, Vipul, and of course Ankit Yadav, Ganesh, Shashank Kumar, good morning sir, Jai Hind. I have a question, is that why Israel did help us in 1999 war by giving his military weapons with new advanced equipment when we were out of... Yeah, Israel did help us in Kargil war, there is no doubt. They gave us precision weapon systems which we used in the war. ठीक है, if countries do help, they had them, we paid money and we took it. फ्री में कोई नहीं देता है, ये मैं प्लीज़ क्लियर कर दूं तुम्हारी बात. There is no free lunch in the world. Everybody, and Israel wants this. Israelis never give you anything unless they extract their pound of dollars in that. Thank you. RMS में कितना नंबर चाहिए? I don't know. Sir, why your SSB video not start on laptop, sir? Tell me. Sir, I am new. How I start your video? I don't know. लैपटॉप पे सारी वीडियो यूट्यूब पे होती हैं, सब स्टार्ट होती हैं. हाँ, प्रिंस डेल्टा. माई फादर हैज़ बीन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर फॉर 12 hours. हाँ, शिवम पांडे, कि मैंने आपका वीकेंड का फंडा लोगों को बताया कि लोग सोचते हैं सैटरडे संडे सोने के लिए होता है. मेरा टोटली उल्टा है. उस दिन कम सो, जल्दी उठो और लेट रात को सो. उस दिन अपनी हॉबीज़, अपना इंटरेस्ट, अपनी ट्रैकिंग और रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग,
नोट्स बनाओ, खूब पूरा दिन काम करो. Yeah, yesterday was 114th birth anniversary of Dr. Jahangir Bhabha, one of the greatest sons of Mother India. Vipul, Anurag, Suraj, Harsh, Precious बहुत शुरू की मैसेज मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं. बड़े अच्छे अच्छे मैसेज थे हमारे ये ऑफ Shivani and Manju. I'm unable to see them. I don't know where they have gone. The messages. My day is fruitful when I took your class. Thank you, Harsh. A considerable diaspora in Kerala is working in West Asia, so they can carry the sentiments around the world. So can these blasts in Kerala be? I don't know if they're linked to Israel-Palestine war or no, but they are certainly related to the internal politics that is going on in India. ठीक है. CDS में कितने नंबर 6 पता नहीं, मैं कितने नंबर चाहिए पता नहीं भाई. कितने नंबर चाहिए पहले आप इंग्लिश ठीक कर लो. दिव्या कंबोज, विदाउट इंग्लिश इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लियर योर SSB. ये मैं बार बार बताता हूँ. रिटर्न ही नहीं क्लियर होना. क्लियर कर भी गए तो पहले दिन ही वापस आ जाओगे. सो प्लीज़ वर्क ऑन योर इंग्लिश, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड so let me see if anything is there. So anyway, I can't see those. They were very wonderful, return. You are the Shakespeare of education. Turn lessons into lifetime work of art. ये है unique Mahi, that is Vaishnavi Pathak. Then I think Israel want a reliable partner in Asia. That's why they help us. I am in 10 preparing for technical entry. Give me some tips. Tips से नहीं क्लियर होता. अरब पंडित, प्लीज़ डोंट आस्क टिप. टिप मांगना बंद कर दो लोगों से प्लीज़. अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो. अपने आप को सुधारो, पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ. ठीक है, उसके बाद देख लेना टिप्स. सो ये टिप मांगना बंद करो बिल्कुल. अच्छा नहीं लगता मुझे बच्चे टिप मांगते हैं. टिप से क्या मिलेगा? मैं क्या टिप दे दूंगा आपको? ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ इनसाइड आउट. पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ. फिजिकली फिट, अवेयर, माइंड क्लीन एंड क्लियर, फ्लेक्सिबल अप्रोच, वेल रेड, अच्छी पर्सनैलिटी, सबसे प्यार से बात करते हैं, सबको समझते हैं. और वैसे बच्चे अपने आप SSB क्लियर कर जाते हैं थोड़ी गाइडेंस के साथ. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग BOAC 23. मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 22 कोर्स कर लिए हमने, ओवर 65 सेलेक्शंस. एंड टुडे इवनिंग, इफ स्टिल समबडी इज डाउटिंग, पॉकेट फ्रेंडली 5 assessors. कैन यू बिलीव दैट? 2 IO, 2 साइकोलॉजिस्ट एंड a GTO. और कल बच्चे बता रहे थे कि GTO के कई सेशन 3.5 घंटे चले. 3.5 घंटे एवरीथिंग. कहते मज़ा आ गया ऑनलाइन पे. द वे मैडम इज एबल टू टेक देम थ्रू, generate ideas and clear your doubts. ये कहीं पर भी नहीं हो सकता for this much of contribution. So yeah, today itself डेमन लुसीफर आपने करना है तो आप कर लीजिए. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सही पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो. सर, आई एम गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया. इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन इंडिया? अरे क्रिकेट की वजह से इंडिया मत जाओ. इंडिया जाओ ऑफिसर बनने के लिए. वहाँ मौका है. क्रिकेट, गोल्फ, हर चीज़ होती है इंडिया में. सब स्पोर्ट्स के लिए मौका है. बट वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए अगर जाओगे सोच रहे हो तो यू मे नॉट बी एबल टू क्लियर द SSB. सो गो टू बिकम एन ऑफिसर. क्रिकेट इज एडिशनल. What is your opinion? India's abstention. I have given my opinion, Rishabh. I think we should have tried to include if we were so much about the 7th October attack by Hamas. But even then, I think we should have voted in favor. We should have voted. बिल क्या था? Innocuous था. It was calling for truce. It was just calling for क्या peace ले आओ और कुछ नहीं था. So I think we could have voted in favor. या BOCC. मेरी इंग्लिश वीक है कमल राय का, तो प्लीज़ वर्क करो. यू कैन ज्वाइन द BOCC कोर्स स्टार्टिंग वेरी सुन. यू आर वेरी, आई एम फिट बिकॉज मैंने अपनी हॉबी कल्टिवेट करके रखी है. साइकिलिंग करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ और पूरे दिन जोश में रहता हूँ. थैंक यू अरव, थैंक यू कीर्ति.
मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत होती है, मुझे एसएसबी की थोड़ी टेंशन है। थोड़ी टेंशन नहीं, ज़्यादा टेंशन है। पहले तो आईडी बना रखी है एनडीए जर्नी। क्यों ऐसी आईडी बनाते हो? एनडीए जर्नी क्या है? एनडीए जर्नी, लाखों बच्चे एनडीए की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईडी तो नहीं बना लेते ना। अपना नाम लिखो, अपना नाम लिखो, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बीओएसी से इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होगा, बट अगर इंग्लिश के लिए चाहिए तो देन ज्वाइन बीओसीसी विच इज 3 months कोर्स। सो आई थिंक यू कैन टेक वैष्णवी एज ए टीचर इन योर कोर्स टू हेल्प स्टूडेंट्स एज ए पीयर लर्नर। हाँ, वैष्णवी को बुलाते हैं एक दिन क्लास में। Thank you, Mayank. A small positive change you make today is going to make your tomorrow better in many ways. Change is difficult but not impossible. My sir, learning is behavior. Yes, Bhavika, sir, because of you, family members are starting to give me good compliment. Thank you, Bhavika. Thank you. पेरेंट्स सेकुलर हो गए हैं। बच्चे कहते हैं सर आपकी बातें सुना सुना के हमने घर में, हमारे माँ बाप भी सेकुलर बन गए हैं। वो भी कहते हैं हाँ यार ये तो गलत है। तो ये है इम्पैक्ट। देर इज़ एनी कैरियर ऑफ स्पोर्ट्स एनडीए विद जॉइन एनडीए। शुभम रहने दो, फिर मैं रोस्ट कर दूंगा। देर इज़ कैरियर ऑफ स्पोर्ट एनडीए विद जॉइन एनडीए। BOCC will start I think first week में, नवंबर में। Sushil Kumar, if you have to improve English, join BOCC course, a 3 months course. It will change your life. It will change your life. That I can tell you. मैं SC हूँ, आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? भाई ऑफिसर्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। लव योर सेल्फ, आई डोंट नो योर नेम। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई स्टेटस मैटर नहीं करता है। आर्मी ऑफिसर्स के लिए देर इज़ नो रिजर्वेशन, नो रिजर्वेशन एट ऑल। कतर रिलेशंस में आज वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, फिर आपसे डिस्कस करूँगा ये क्या इशू है। बाकी जिनके पास टेलीग्राम में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनको बताओ, जो घर वालों को बताओ कि कृपया करके आप जो है इसको सुबह सुबह देख लो, न्यूज़ देख लो। हाँ, क्लीनिंग माई होम एंड आपका यूट्यूब चैनल चला दिया है फुल साउंड में, सारे घर वाले सुन रहे हैं। ये देखो, वेरी गुड। सारे घर वालों को राम राम, सारे घर वालों को राम राम। ठीक है, यही तरीका है। बाकी चैनल कर दो बंद। BOCC कोर्स, जोन सा भी कोर्स करना है तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। चलो, विल एंड इट हियर। BOAC 23 स्टार्टिंग टुडे। आज भी डाउट है तो कॉल माई टीम, डिस्कस विद देम। जो भी आराम से बात करेगी मेरी टीम, मैंने बता रखा है। आराम से 10 मिनट भी बच्चे बात करते हैं, पूरा डाउट क्लियर। ज्वाइन कर लो एंड शाम को हम आपसे बात करेंगे ठीक 8 बजे आज ओपनिंग सेशन में। सारी टीम होएगी हमारी SSB, दे विल ऑल बी देयर टू टॉक टू यू। BOCC आप कॉल करो मेरी टीम को, आप जस्ट कॉल करो मेरी टीम को। आई विल शेयर द लिंक ऑन द टेलीग्राम अगेन टुडे। I'll share the link in the telegram. चलो, so thank you very much बच्चा पार्टी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात के। ऐसे ही खुश रहो, पॉजिटिव रहो और हमेशा जो है इस तरीके से अपनी लाइफ जियो कि आपके आसपास भी लोग कहें कि हाँ यार ये क्या लड़का है, क्या लड़की है। हमेशा पॉजिटिव रहो और फ्लेक्सिबल रहो, मेंटली फ्लेक्सिबल रहो और कीप लर्निंग एंड कीप अनलर्निंग। पुरानी चीज़ें भी भूलते जाओ और नई